हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। आज रहेगी 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। इट्स अ हार्ड डिक्टेशन जो कि अधिकतर बच्चे 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन लिख रहे हैं। वो एसएससी सीजीएल वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल स्टूडेंट्स विच आर कनेक्ट टू थ्रू द 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। प्लीज़ लाइक शेयर दिस सेशन एंड फर्स्ट टाइम विजिट की हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स अ वेरी हेल्पफुल सेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एसएससी सीजीएल वालों टाइपिंग स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन है एंड हार्ड डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड जो बच्चे लिखते हैं, जिनकी स्पीड कम है, वो भी लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट। Honorable member would recall that I had stated in my budget speech that the credit institutions will have the freedom to pass on the burden of interest tax to the borrowers by adjusting suitably the rate of interest. It has been brought to my notice that in my cases where term loans have already been sanctioned, the credit institutions may be able to vary the rate of interest because loan agreements don't contain a provision permitting such variation. I propose to move an amendment to the bill to provide overriding legal authority to the institutions to vary the rate of interest if they so desire in order to pass on the burden of interest tax to the borrowers. Further, I also proposed to exempt from the imposition of interest tax cooperative land mortgage banks, cooperative land development banks, and cooperative societies engaged in the business of banking, which cater primarily to the needs of farmers and village artisans. My proposal to extend the coverage of the expenditure tax to the expenditure incurred in restaurants providing superior
facilities like air conditioning has been generally welcomed because these restaurants are patronized by the affluent sections of the society. It has, however, been pointed out that the criteria for identification of restaurants expenditure in which would come within the preview of the proposed tax is cumbersome. Cumbersome in the form in which it is contained in the bill. I therefore proposed to modify it and adopt a single criterion, which will be that the restaurant is air conditioned, will be moving necessary amendment bill for this purpose. I propose to make some modifications to the proposals in the bill relating to deduction of tax at source from certain payments. The requirement to deduct tax from interest on bank deposits will apply only to interest on term deposits other than recurring deposits. Further, cooperative land mortgage banks, cooperative land development banks, primary agricultural credit societies, and primary credit societies will be taken out of the purview of this requirement. We would thus exclude from the ambit of tax deduction at source most of the depositors from rural areas. Further, I am sure that these modifications will ensure that the small taxpayers are not put to any harassment as a result of the proposed requirement of deduction of tax at source from bank
interest, and withdrawals from the National Savings Scheme. Full stop. Stop dictation. आई होप स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जो 30 वर्ड पर मिनट वाले स्टूडेंट्स लिखते हैं डिक्टेशन, वो लिख लिए होंगे। जहाँ भी ना लिख पाएँ प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर करें कि लिख लिए हैं। यस मैम, आई हैव रिटन दिस डिक्टेशन वेरी वेल, ओके। एंड कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें सेशन को, ओके। ये 30 वर्ड पर मिनट वाली डिक्टेशन जैसा कि पहले मैंने कहा ही है 10 बजे दिया जाता है, ठीक। और इसी चैनल पर 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन एंड 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन शाम 8 बजे 8 PM पर बोला जाता है, ओके। चैनल पर बने रहें। जिन स्टूडेंट्स की स्पीड हाई है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लिख रहे हैं, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और लगभग होगा भी, बहुत सारे हाई कोर्ट NVS ऐसे, ठीक है। तो इन सब स्टूडेंट्स तैयारी ज़रूर रखें। और SSC स्टेनो का तो एग्ज़ाम रिटन हो ही गया है। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा है, आंसर की भी आ गई है, चेक कर लिए होंगे, अच्छा है, तो वो अपनी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट एंड 100 वर्ड पर मिनट लिखना स्टार्ट कर दें, ओके। शाम 8 बजे बोली जाती है, ज़रूर लिखें। टेक केयर।